Hello, Joe. Let's read the given question. The question says the momentum of a photon in an X-ray beam of 10 raised to minus 10 meter wavelength is option A 1.5 10 raised to minus 23 kg meter per second, option B 6.6 10 raised to minus 24 kg meter per second, option C 6.6 10 raised to minus 44 kg meter per second, option D 2.2 10 raised to minus 52 kg meter per second. So to understand the given question, we must understand about the key concept of de Broglie wavelength of matter wave, right? So as per de Broglie, he described the duality of uh, the nature of particle, right? So according to first of all we can say, सबसे पहले अगर हम बात करें कि फोटोन की एनर्जी इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन h equals to E equals to h nu, and it can also be written as hc over lambda, right? And if we consider, let's say कि जो पार्टिकल है which is moving, it has the dual nature, particle nature भी है and it has also the wave nature, ठीक है? So अगर हम बात करें by Einstein for equation, Einstein equation of rest mass energy, we know कि energy और mass is interconvertible, so E equals to mc square हम लिख सकते हैं, right? In that situation we can say therefore photon की जो energy थी we can say mc square will be equals to hc by lambda, and this will imply that lambda can be written as h over mc, where mc is the momentum of photon, or we can say photon momentum है ये, right? So जो particle है photon का, that is also can be treated as a wave, ठीक है? So from this expression अगर हम बात करें, यहाँ पे p इसको हम p से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं like lambda is equals to h by p. p is represented for momentum. So we can say similarly de Broglie suggested that particle of mass m moving with speed v, अगर वो v स्पीड से चल रहा है तो उसका जो वेवलेंथ आएगा करस्पॉन्डिंग इट कैन बी रिटन एज h अपॉन mv, राइट? सो इसके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल के लिए भी ये डुअलिटी अप्लीकेबल है कि अगर पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है, जैसे यहाँ पे फोटोन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट c, तो वैसे अगर कोई पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है, सो वी कैन राइट लैम्डा कैन बी रिटन एज h बाय mv, राइट? सो यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन. अब हमें बोला जा रहा है कि द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ एक्सरे बीम, हमें वेवलेंथ गिवन है और हमें मोमेंटम पूछा जा रहा है. सो सिंस इट इज एन एक्सरे केस, so we can directly use the formula that is lambda is equals to h by c, h by p we can say. So p की वैल्यू आ जाएगी h, that is Planck constant, उसकी वैल्यू होती है 6.62 10 raised to minus 34 joule second, divided by lambda has been given as 10 raised to minus 10. So ये जब रिजल्ट हमें मिलेगा that will be 6.62 into 10 raised to minus 24 kg meter per second. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.